The next condition which favors cross pollination is heterostyly. Now नाम से ही पता चल रहा है hetero means different and style means it is the part of the gynoecium जो उसको length दे रहा था, right? So इस तरीके से याद रखना है, length hetero मतलब different length. So in this case again flower is bisexual, androecium भी present है, gynoecium भी, but दोनों बहुत दूर दूर है. androecium छोटा ग्रो हो रहा है तो gynoecium ऊपर तक ग्रो हो रहा है, और किसी फ्लावर में gynoecium बहुत ऊपर तक ग्रो हो रहा है तो androecium छोटा सा है. So this way anther cannot reach properly towards the stigma, and again this is the condition which favors the cross pollination. Okay, so heterostyle is the condition where the length of androecium and gynoecium is completely different, because of which it favors the cross pollination. To know the next condition, move to the next video.